So hi everyone, this is Muskan, your mentor of Fiscal Science. So again हम लोग बात करेंगे आज जेस्ट 2025 में ऑल इंडिया रैंक 5 जिन्होंने स्कोर किया है और वो है रंजीत। उनसे बातचीत करेंगे कैसे उन्होंने अपनी तैयारी की, ठीक है, और क्या उनकी जर्नी रही इसके बारे में उनसे जानेंगे। कैसे उन्होंने प्रिपेयर किया, कैसे रिवीजन किया, ठीक है, एग्जाम के लिए और जेस्ट में क्या अलग किया, ये सारी बातचीत करें। सो रंजीत, क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है? Yes, ma'am, I can hear you. Okay. So first of all, a very warm congratulations to our platform and a very warm congratulations to you कि आपका इतना अच्छा रैंक आया है जेस्ट एग्जाम में, ठीक है। और Thank you. तो पहले Thank आप मुझे you. ये बताइए आपको कैसा लग रहा है? Uh, I didn't expect that I'll get this much good rank, but I'm very happy now. Okay, that's great. So tell me about your journey first. Uh, I didn't prepare separately for JEST exam, but for JAM exam, almost I started watching YouTube videos from August itself. And then later at the end, like in the December, I bought batch and I started preparing even more rigorously. Okay. Then I started watching all the videos which were there in the batch. Almost I watched all the videos. I didn't have time for revision, but at the last, like around 1 week, I did a complete revision. In 1 week you did complete revision. Yes, ma'am. So you are doing BSc from where? Christ University. Okay. So मीन्स मैं ये समझ सकती हूँ कि आपकी जो बीएससी रही होगी वो काफी अच्छी रही होगी, Mm, राइट? yeah, the college we had classes like till 4, so in college itself I used to concentrate. But I didn't have time for entrance exam preparation because after 4 I used to come at 6 over here and then get tired. But still I started watching videos and yeah. Okay. So how was the experience with IIT JAM examination? IIT JAM exam didn't go very really well for me. I expected to get around 60, but at the end I got only 50 marks. But So rank was that also 50 marks is also very high mark. So yes, what was the rank? rank was 97. 97. Okay. So according to that, आपको IIT भी मिल ही रहा होगा, IIT IISc बैंगलोर. Yeah, So yes. actually, my aim was to get into IISc, ma'am. Uh, but I thought 97 won't be enough to get into IISc. But then I got interview call letter and I was happy with that only. Okay. So how was the experience in the interview? Interview, they ask basic question. They check whether we have the basic knowledge. They don't ask like high level topics and all. They start with all easy questions only, and then they go step by step. They go and higher till where we break. They check that part. So can you share a few questions? Uh, Basically, first they ask what are your favorite topics. हाँ. I told electromagnetism, electronics. Electronics was easy for me. Then quantum mechanics, I told. Okay. Uh, Quantum mechanics question was very easy. Actually, they gave a wave function and they asked it to normalize it. And in the process of normalizing, they keep asking other questions like, does this guy know the basics? You know, Okay. they asked to derive a few like I think normalization of some one wave function, and then they asked about energy eigenvalues and all those questions. The quantum Okay. mechanics So was easy. question is very basic, Yeah. right? Okay. So From any question they electromagnetism, it ask was in application part? application in the sense they didn't ask much of applications. So, Okay. electronics, they didn't have time to go to electronics. The mathematical physics was very hard for me. They asked graph questions. Graph. Yeah, Graph. Yes. graph. They One question is fixed from graph, right? yeah, one question is like fixed from Graph. graph. Right. But since I watched some of the videos, I was able to do the graphs. Okay. Graph was very hard, I guess. Apart from that, other part was easy. And from electromagnetism, they gave some parallel capacitor problem, which I was not able to answer properly. But by that, they give hints to us, so with which we can develop the answer. और So इंटरव्यू मेनली अप्रोच मैटर करती है, फाइनल आंसर तो इट्स लाइक अ रिटन एग्जाम, राइट? yes, तो ma'am. यस.
तो वो वही देखते हैं कि आप किस तरीके से अप्रोच कर रहे हो। अगर वो आपका अप्रोच सही है तो फिर आपके बहुत हाई सिलेक्शन, मतलब हाई चांसेस होते हैं सिलेक्शन होने के। बट हाँ, हम्म, अप्रोच में ये होता है ना कि कुछ भी आप बोल रहे हो वो समझ में आता है सामने जो इंटरव्यू ले रहा है उसको भी। चलो हम्म, बहुत अच्छी बात है। सो जैसे अगर आपका आईआईटी जैम का एग्जाम हुआ होगा उसके बाद आपने जेस्ट के लिए कुछ अलग प्रिपेयर किया था, या जो आपकी कॉलेज नॉलेज थी वही आपको इसमें हेल्प कर रही थी? Actually, after IIT JAM, I was preparing for interviews. I studied Griffith's complete book. I studied ओके। both quantum mechanics and electromagnetism, but separately for just I didn't study. After I finished interview, I stopped studying completely, but I had registered for the exam, so I had to go and give the exam. ओके, सो इट्स बाय प्रोडक्ट, Yeah, राइट? yeah, like the preparation for JAM, the result came for just. ओके, बट जेम जैम में भी रिजल्ट तो आपके फेवर में ही है, और उसी के थ्रू आपको आईआईएससी बैंगलोर जाने का मौका मिल रहा है, अदरवाइज तो जेस्ट के थ्रू भी आप जा सकते थे। चलिए Mm. बहुत अच्छी बात है। सो एनी वन मैसेज जो आप अपने जूनियर्स को देना चाहो? I'll advise them to start early, no, not like late at the end, like me and struggle. So like starting like at least 1 year before is very good, and making notes is also very useful. Didn't have time to make notes because I started at the very end. So I had to take a printout of whatever class notes you did and started reading from that itself. I ओके। didn't have time to make notes and all. So if I had made notes, it would have been even more easier. So that would be a good thing. ओके, सो कैन यू टेल समथिंग अबाउट द अटेम्प्ट ऑफ एग्जामिनेशन? मीन्स कि किस तरीके से आपने एग्जाम को अप्रोच किया, पहले आईआईटी जैम का बताना और फिर जेस्ट का। IIT JAM exam, I thought of starting with 2 marks questions and all. So even if I like no not perform well, at least I have some marks in my hand. ओके। So I went through MSQs first. MSQs were a bit easier. Like I got all marks from MSQs. Then I went to numericals. Numericals after doing 2, 3, I got a little demotivated because of tough questions. And then I went to MCQs. In MCQs, I was like fully demotivated. So I thought this exam is out of the hand. I started wasting time on harder questions and I couldn't see like इजी 10, 20 क्वेश्चन। questions at the end. देन एंड व्हाट अबाउट द जेस्ट एग्जाम? Just exam was like very, I didn't expect just to be so easy. Just exam was very easy compared to JAM exam. Uh, जेस्ट so, एग्जाम इज जस्ट लाइक collection of different questions that was asked in mm, different examination, और yeah. that is just 2025 examination। इस बार जेस्ट का पेपर कुछ ऐसा ही था। I thought many questions will be from the master's portions also. So I didn't prepare for anything of that. Just with this IIT exam preparation, whatever I remembered, I wrote. I like left few questions because like they were like time consuming. So yeah, just exam was easier than jam. तो वैसे एक एग्जाम के पैटर्न का भी बहुत मैटर होता है, जैसे अभी आपने बोला एनईटी टाइप में आप बहुत ज्यादा अटक रहे थे, कुछ तो क्वेश्चन भी लेंदी था, टफ था, और बहुत बार हमारा कैलकुलेशन की वजह से भी कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। कि मान लो उसमें पूछा होगा किसी पर्टिकुलर इंटीजर फॉर्म में आंसर आ रहा है और आपका आंसर डेसिमल में आ रहा है, तो Mm. वो बहुत सारी चीजें होती हैं जो डिमोटिवेट करती है। एक एग्जाम पैटर्न भी बहुत मैटर करता है। ये चीज हमारे लिए जेस्ट में थोड़ी सी सही रहती है, कि वहां पर थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न है, एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन नहीं है। बाकी यस, जय इस बार आईआईटी जैम 2025 थोड़ा सा टफर एंड पे भी था। देखिए हर स्टूडेंट की अप्रोच अलग होती है, बट इसी अप्रोच को आपको एडेप्ट करना होगा अपने टेस्ट के अंदर। जब आप टेस्ट देते हैं जो अप्रोच आप वहां पर रखोगे वही सेम अप्रोच आपकी रिफ्लेक्ट होगी आपके फाइनल एग्जाम में। सो वेरी फर्स्ट डे से जब से आप टेस्ट दे रहे हो तब से आप उसी माइंडसेट के साथ अपना टेस्ट दो कि ये आपका एग्जाम। अगर आप एग्जाम में होते तो किस तरीके से परफॉर्म करते। ठीक है। सो अगर मैं आपसे जैसे रिवीजन या शॉर्ट नोट्स के बारे में पूछती हूँ तो क्या मतलब क्या पॉइंट है आपका कि शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए या फिर आपको आपने अपने नोट से ही रिवीजन किया था? As far as my point is there, I don't think I required notes, but notes is a must for every student. At the last moment to refer even formulas, we need notes. I made only a formula sheet for one thermodynamics subject. I watched the videos and then made the notes. So thermodynamics was easy for me. But if I had made for every subject, it would have been even more easier. So making notes is like a must thing.
मतलब अल्टीमेट कंक्लूजन वही है। देखिए, नोट्स आपको अपनी ही लैंग्वेज में बनाने होंगे, और दूसरा आपको अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, ताकि आप जब लास्ट में जनवरी में रिवीजन कर रहे होगे दोबारा से अपने पूरे सिलेबस का, तो आपको वो अपने पूरे कंप्लीट नोट्स को अगेन रिविजिट ना करना पड़े। जो भी आपने क्रिस्प फॉर्म में लिखा होगा शॉर्ट नोट्स में, उनकी हेल्प से आप आराम से रिवीजन कर पाओगे। ठीक है। सो इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछती हूँ, अभी नेक्स्ट आपका टारगेट क्या है? मतलब इससे अभी आगे क्या सोच रहे हो? I'm planning to finish PhD here and become a scientist, theoretical physics. ओके, थियोरेटिकल फिजिक्स। Yes. ठीक है, चलिए, सो ऑल द वेरी बेस्ट। काफी अच्छा लगा। अभी जितनी मेहनत की है, इससे डबल या ट्रिपल मेहनत आगे आपको करनी है, तो उसके लिए तैयार रहिए और अच्छे से मेहनत करना। तो जो आपका ड्रीम है, आई होप सो वो फुलफिल हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. थैंक यू सर।